मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गोनाड्स के बारे में। गोनाड्स मतलब ओवरीज एंड टेस्टिस। ओके, सो गोनाड्स आर कम अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम. Gonads means what? Gonads are the endocrine organs or endocrine gland, that is sex organs, and reproductive glands that produce the gametes. There are two gonads. In male there is a testis, and in female there is a ovaries. The gonads develop from the mesoderms of embryo and the organs that produce the gametes. In male there is a sperm, and in female there is a ova. Okay, or egg. So first हम पढ़ेंगे ovaries के बारे में. So ovaries are female gonads or female glands which produce the sex organs or sex hormones and ova eggs. ova और eggs. Okay, जो ovaries है ये female gonads में आ जाती है. It produce the sex organs and ova. Each woman has two ovaries. Location. Location lie on either side of the womb. Womb means what? It is a uterus. Okay. Lie either sides of the womb on lateral wall of the pelvis in ovarian fossa. ये कहाँ पे situated है? Ovarian fossa में. Okay. और lateral sides of the uterus में ये present है. Head placed by the ligament attached to the uterus. ये कैसे अटैच है यूट्रस से? बाय द लिगामेंट्स. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द फिगर ऑफ यूट्रस. यूट्रस, दिस होल थिंग इज यूट्रस. इनसाइड देयर इज अ फंडस ऑफ द यूट्रस. In both the sides, right and left, there is a fallopian tubes, and the ovaries are attached by the ligaments. On both the sides, two ovaries are present, right and left side. And here there is an internal os, and here there is an external os, and this is a vagina. Okay, so हम लोग आज फिर पढ़ेंगे खाली ovaries के बारे में. एनाटॉमी तो आपने देखी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस की. So ovaries are the female gonads glands which produce the sex hormones and ova or eggs. Each woman has two ovaries. Location lie either sides of the womb on lateral sides of the lateral wall of the pelvis in ovarian fossa. Held placed by the ligaments attached to the uterus. The size of the ovaries are 4 centimeter long, 2 centimeter wide, and 1 centimeter thick. And it is a oval shape. The ovaries are in oval shape. Okay, and the size is 4 centimeter long, 2 centimeter wide, and 1 centimeter thick. These ovaries secrete estrogen, progesterone, relaxing, and actin hormones. Okay, ये हार्मोन्स ओवरीज सिक्रेट करती है. कौन से हार्मोन्स है सिक्रेटेड? इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिंग, एक्टिन, एक्सेट्रा. ओके, सो ये हार्मोन्स सिक्रेट कर रहे हैं. सो हाउ इट वर्क्स? ये कैसे सिक्रेट्स होते हैं हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचता है. हाइपोथैलेमस secretes gonadotropin hormones releasing hormone, that is GnRH, and this GnRH stimulates the anterior pituitary lobe, and this anterior, after stimulating this anterior pituitary lobe, the anterior pituitary lobe secretes two hormones, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. ये anterior pituitary lobe दो हार्मोन सिक्रेट करता है. कौन से दो? follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone stimulates the ovarian follicles, and this after the stimulating, the estrogen hormones release from the ovarian follicles. And what is about the luteinizing hormone? These luteinizing hormones stimulate the corpus luteum of the uterus, and this corpus luteum produce the progesterone hormone. Okay, so this is the work pattern of the hormones secreting.
देन फर्स्ट हम देखेंगे ईस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट्रोजन्स दिस इंक्लूड द एस्ट्रॉन और एस्ट्रेडॉल। ये जो ईस्ट्रोजन है, तो फर्स्ट ईस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट्रोजन्स इंक्लूड द एस्ट्रिन, एस्ट्रेडॉल, हेल्प्स टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका काम क्या है? हेल्प्स टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इसका काम क्या है? हेल्प्स टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड so estrogen helps to regulate the menstrual cycle. So ovaries secretes estrogen, progesterone, relaxin and actin. Actin means inhibits hormones. So first देखेंगे estrogen के बारे में। estrogen के बारे में पढ़ेंगे। estrogen helps to regulate the menstrual cycle. ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो क्या कर रहे हैं? हेल्प्स टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करते हैं इन फीमेल। ओके, सो इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। द सेकेंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन it also helps to regulate the menstrual cycle and development of memory glands. It also helps for the formation of placenta during the pregnancy, okay, and maintenance of the pregnancy. ये pregnancy maintain करके रखता है और placenta formation करता है in pregnancy, okay. जो progesterone का काम क्या है? It also helps to regulate the menstrual cycle and development of mammary glands. It also helps for the formation of placenta and maintenance of the pregnancy. Then next hormone is relaxin. The relaxin which is produced in small quantity, ये बहुत कम quantity में secrete होता है uterus ये ovaries से. So what is the work of the relaxin? Soften the opening of the uterus. जो uterus का opening है, what is called that? Cervix. Okay, cervix at the time of pregnancy. जो pregnancy के time में जो यूट्रस का वॉल है वो सॉफ्टन बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट इज इनहिबिट्स हार्मोन्स, दैट इज एक्टिन हार्मोन्स। इट इनहिबिट्स द स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन इनहिबिट्स करता है। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट द ओवरीज। समझ में आया है? ओवरीज क्या है? ओवरीज ये है फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गोनाड्स है। ओके, और ये क्या कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करता है? ओवा और oocytes और एग्स। द ओवरीज आर फीमेल गोनाड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन्स एंड द ओवा और एग्स। Each woman has 2 ovaries. The size of the ovaries are 4 centimeter long, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick, and it is oval shape. Then it lies either sides of the uterus and lateral wall of the pelvis in ovarian fossa. ये कहाँ पे located है? Ovarian fossa में located है, either sides of the uterus. Then how it works? Hypothalamus secretes the hormone. Which hormone? GnRH means gonadotrophin hormone releasing hormone. Okay, ये hypothalamus से release होता है, that is the neurohormones, and it stimulates the anterior pituitary lobe, and this after stimulating the anterior pituitary lobe, the 2 hormones which are secreted by the pituitary lobe, pituitary gland, which are those? Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone goes and stimulates the uterine follicles, ovarian follicles, and after that the ovarian follicle secretes the estrogen. Then next thing is the luteinizing hormone. The luteinizing hormone stimulates the corpus luteum of the uterus and
it secretes the progesterone. Okay, so ये दो हार्मोन्स secreted by ovaries, and other दो हार्मोन्स कौन से हैं, रिलैक्सिन एंड एक्टिन, दैट इज इनहेबिन्स हार्मोन्स. ओके, सो ईस्ट्रोजन का वर्क क्या है? ईस्ट्रोजन ये it is secreted by the ovaries and it helps to regulate the menstrual cycle and development of mammary glands. Next hormone is progesterone. It also helps to regulate the menstrual cycle and development of mammary glands, and it also helps for the formation of placenta and maintenance of the pregnancy. Then relaxin hormone, which is produced in a very small quantity, and it helps to softening of the opening of the uterus, that is cervix, during the time of pregnancy or during the time of delivery. Then inhibin hormones. What is the work of inhibin hormones? Inhibin hormones inhibits the secretion of follicle stimulating hormone. Okay, FSH का secretion कम कर देते हैं कौन? एक्टिन, that is inhibin hormones. So आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है ओवरीज के बारे में. So अभी नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट गोनाड इज मेल गोनाड. So next gonad is male gonad, that is testes. Testes, these are the male gonads that secretes the hormone, that is testosterone and inhibins hormones. Okay, the location of these testes in the scrotum. Okay, the location is in the scrotum, and the size of the testes is 5 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter. Weight is about 10 to 15 gram, and this is oval shape. Okay, so the testes are there are two testes are present in male, and this testis secretes the two hormones, testosterone and inhibin hormones, location in the scrotum, and the size is 5 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter. Weight is about 10 to 15 gram, and these are in oval shape. Okay, now two hormones are there, they are secreted. Which are those? Testosterone. Okay, first is testosterone, and what is the about, हम अभी डिटेल में देखेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में. It is stimulating by FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone stimulate करके ये हार्मोन सिक्रेट होता है. ओके, इट प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजेनेसिस. ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करता है. ओके, इट ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स and promotes the development and maintenance of the sexual hormones. It also helps to develop the male characteristics. इनका काम क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? ये क्या करता है? किधर से स्टिमुलेट होता है? बाय स्टिमुलेटिंग बाय FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and it produce the spermatogenesis, means sperm produce करने का काम करता है, and it also helps for necessary of growth and मेंटेनेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन. ये क्या करता है? जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनके ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का काम करता है. इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेक्सुअल हार्मोन्स. ये क्या करता है? सेक्सुअल हार्मोन्स प्रमोट डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रमोट करता है इनकी. It also helps to develop the male characteristic, that is the secondary characteristic, that is hair growth and braids, etc. And the next hormone is inhibin hormone, that is actin hormones.
इट इनहेबिट्स द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देता है। ओके, सो ये हो गया मेल गोनाड्स के बारे में। सो आज हमने देखा है फीमेल गोनाड्स एंड मेल गोनाड्स। ओके, फीमेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओवरीज, एंड मेल में क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस। ओके, सो फीमेल में कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ओवरीज, estrogen, progesterone, relaxin and inhibin, that is actin. Okay, and in male gonads the testes are produced two hormones, that is testosterone and inhibin hormones. Okay, so ये hormones आपको याद रखने हैं, that is the sex hormones which are produced by a reproductive organs. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में।